Hello, dear students. Let's complete the final explanation of the chapter which we have already started in our previous video. That is from gathering to growing foods. Dear students, before starting this video, let me make you clear few things that might be bothering to you. देखिए, many of you would be using old NCERT books and some would be using new NCERT books which is available latest in the market. दिस चैप्टर आई हैव नॉट मेंशन चैप्टर नंबर मैंने इसीलिए नहीं लिखा है ओल्ड बुक में इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 3 एंड इन न्यू एनसीईआरटी बुक इट्स चैप्टर नंबर 2 सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड जस्ट आप चैप्टर का नाम देखिए फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स द मेन थिंग इज चैप्टर नेम ऑल्सो आई हैवंट मेंशन पेज नंबर हियर बिकॉज पेज नंबर का भी डिफरेंस है ऑफ कोर्स जब न्यू बुक में वो चैप्टर नंबर 2 है तो पेजिनेशन उसका कुछ और है और ओल्ड बुक में द पेजिनेशन इज समथिंग एल्स सो प्लीज प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर आपकी बुक में चैप्टर है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स तो आप इस पर स्टिक कीजिए और ऑफ कोर्स ये दोनों ही बुक्स में है ओल्ड में भी और न्यू में भी ओके एंड फॉर मीन वाइल दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ योर UT1 syllabus for class 6th SST. Okay, so let's start the video. There is not much to be explained in today's video. Only two headings are left. जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था उसके बाद में केवल दो हेडिंग्स लेफ्ट हैं मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए लिखा है ड्रॉ अ पिट हाउस इट इज एक्चुअली एक्टिविटी बट हम लोग आज यहाँ की हेडिंग से स्टार्ट करेंगे इट्स अ सेकेंड वीडियो एक्सप्लेनेशन फाइनल वीडियो एक्सप्लेनेशन सी इन द पैलियोथिक एज क्या होता है व्हाट इज पैलियोथिक एज पैलियोथिक मींस व्हेन द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम जब इंसान ने पत्थर को अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट किया पहली बार ओके that is called as uh, original stone age initial stone age neolithic means neolithic जब person the human beings become advanced in using the tools उन्होंने टूल्स को स्पेशल तरीके से यूज करना स्टार्ट किया शार्प टूल्स स्टोन्स को कटिंग के लिए स्टार्ट किया हैवी टूल्स को हैमरिंग के लिए स्टार्ट किया यानी कि ह्यूमन बींग्स को या अर्ली मैन को समझ में आ गया कि पत्थर में भी अलग अलग वैरायटी है अगर पत्थर में एज है शार्प एज है ओके तो वो कटिंग के लिए यूज हो सकता है अगर स्टोन में वजन है पत्थर में वजन है इट हैज अ वेट इट कैन बी यूज फॉर बीटिंग पर्पस एंड हैमरिंग पर्पस सो नियोलिथिक इज कैन बी सेड एज मोर एडवांस्ड यूज ऑफ स्टोन्स फाइन अब कैसे कैसे इंसान ने इसको स्टोन को यूज किया लेट्स सी व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड यू नो ग्रोइंग ग्रेन्स ओके तो एज वी ऑल नो फॉर मेकिंग व्हीट फ्लोर आटा बनाने के लिए गेहूं का आटा बनाने के लिए वी हैव टू क्रश द व्हीट ग्रेन हमें व्हीट ग्रेन को क्रश करना पड़ता है उसको पीसना पड़ता है दबाना पड़ता है फॉर दैट वी नीड हैवी स्टोन्स इन विच दैट ग्रेन इज बीइंग प्रेस्ड जैसे पहले के टाइम में वी यूज टू हैव राउंड चक्की ओके सो ग्राइंडर्स वर यूज्ड ओके nowadays we are using modern day we are using electronic mixer grinders है ना मिक्सी यूज करते हैं हम लोग तो इन अर्लियर डेज ग्राइंडर्स वर यूज्ड फॉर ग्रेन्स दे वर हैमर्ड और उससे क्या होता था हम ग्रेन्स को क्रश करते थे एंड दे बिकम इन पाउडर फॉर्म देन वी कैन यूज इट इन एनी वेज फॉर कुकिंग द फूड उनकी आराम से हम आटा बना के वी कैन मेक एनी चपाती और एनी टाइप ऑफ ईटिंग स्टफ मोटर पिस्टल इज लाइक यू नो इट्स अ स्मॉल हैंडल एंड इट्स अ स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर आप उसको उसमें कोई भी छोटी चीज ग्राइंड कर सकते थे आराम से आज भी मोटर एंड पिस्टल इज बीइंग यूज्ड बाय द डॉक्टर्स हु यूज पाउडर टाइप ऑफ मेडिसिन ओके they make powders they mix tablets and they crush it and it is being used by the uh, people okay for consuming that thing acha apart from that अर्थन पोट्स वर यूज मिट्टी के मटके या घड़े यूज करे जाते थे जिसमें फूड्स वर बीइंग स्टोर्ड या फूड वाज बीइंग प्रिपेयर्ड ओके इट वाज ऑफ कोर्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड्स what type of varieties of foods were there rice was there wheat was there lentils was there lentils means it's a variety of pulses dal okay masoor dal is specifically used for this word lentils okay apart from cooking activity human being also started weaving clothes okay उसने कपड़ों को तैयार करना भी सीख लिया बाय द यूज ऑफ कॉटन एज ही वाज ऑलरेडी रियरिंग शीप वो शीप ऑलरेडी रियर करता था शीप इज अ सोर्स ऑफ cotton fine now coming to next heading we will be
एक्सप्लोरिंग अ साइट, एक ऐसी जगह के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसे विलेज के बारे में डिस्कस करेंगे विच वाज सेड टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ विलेज ऑफ मॉडर्न डे इंडिया नाउ। आज की इंडिया के हिसाब से ये पोर्शन अब इंडिया में नहीं रहा, इट हैज शिफ्टेड टू पाकिस्तान सिंस पार्टीशन, बट इन दोज डेज इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। आई हैव ड्रॉन अ रफ मैप ऑफ इंडिया stating the northern part of India. Okay, it shows the northern part of India, this one J&K part, and this line which I have drawn, it's an international boundary in those days. This side it's Iran and this is Mehergarh. Okay, somewhere between Iran and river Indus. We will be looking after lying and dying in living and dying in मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ के लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी, अगर कोई पर्सन वहां पे रह रहा है या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनका क्या बिलीफ था, व्हाट वर दे बिलीविंग। सी दिस मेहरगढ़ वाज वेरी क्लोज टू बोलान पास। बोलान पास इज लाइक अ बाउंड्री, एक रास्ता। पासेस बनते हैं यूजली माउंटेन्स में। ओके, द टनल टाइप वे, जिसमें माउंटेन में टनल होती है और टनल के थ्रू हम क्रॉस करते हैं माउंटेन को, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ पास। तो बोलान पास वाज द वे टू ट्रेवल ऑल द वे थ्रू ईरान। उस टाइम में टनल्स ऑफ कोर्स नहीं होती थी, इट वाज अ नेचुरल वे एंड इट वाज कॉल्ड एज बोलान पास। So when the excavation was done, when the archaeologists excavated that village, so what they found out is there was a rectangular or a square shaped houses that were under the ground। वो पहले कभी उस टाइम में बने होंगे जो अब आज के समय में दे हैव गॉन बिलो द अर्थ। तो इससे ये पता चलता है कि पीपल ऑफ दोज डेज वर लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप्ड हाउसेस। they were usually of 4 rooms, they were having 4 rooms, and also they were having a storage facility। what storage? food grain storage and fodder for pet animal, यानी कि जो भी किसान अपने खेत में से जो भी अनाज पैदा करता था या जो केटल्स रखते थे उनके फोडर के लिए इमरजेंसी स्टॉक रखा रहता था घर में। वन ऑफ द रूम वाज स्पेयर्ड एज अ स्टोरेज। ओके, फाइन। एंड नाउ कमिंग अबाउट द death ceremonies in Mehergarh. What used to happen was the people of Mehergarh believe that if a person dies, if there any relative or friend dies, they think that this person will now enter a new world। जिस इंसान की मृत्यु हो गई है अब वो दूसरी दुनिया में जाएगा और वहां उस दूसरी दुनिया में उसे उन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो उसे अभी पड़ती थी। मीन्स ही विल रिक्वायर फूड, he will require clothes, he may even require ornaments, he may require other such things। so people used to even bury goats with them। goat क्या करेगा? it will serve as a food for that person in the next world। he will not remain hungry, he will not have to wander for food हियर एंड देयर। मतलब बिल्कुल उसको इस तरह से पर्सन का जो फ्यूनरल होता था, लास्ट सेरेमनी होती थी, डेथ सेरेमनी, वो इस तरह से प्लान की जाती थी कि उसके साथ में सारा वो चीजें रखी जाती थी, ऑल द आइटम्स विच ही मे रिक्वायर इन हिज नेक्स्ट जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the two headings which I have discussed as per our NCRT books, the books which we are having, new NCRT books। I hope your doubt would be cleared। let me explain you again before winding up। आप लोग जब अपनी बुक से इस चैप्टर को कोरिलेट करेंगे इस वीडियो के साथ में, द चैप्टर नेम इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। ओल्ड एनसीईआरटी बुक इज हैविंग चैप्टर नंबर 3। ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 3rd नंबर पे है। न्यू एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 2nd नंबर पे है। ओके, पेजिनेशन का डिफरेंस है, ऑफ कोर्स न्यू बुक में पेजिनेशन अलग है और ओल्ड बुक में अलग है। एंड दिस चैप्टर फॉर मीन वाइल इट्स अ पार्ट ऑफ योर UT1 syllabus for class 6th SST। so that's it for today, my dear students। we will meet soon with a new chapter with more information to explore। till then, stay safe। jai hind।